इस वीडियो में मैं विंडोज़ 10 के ऊपर काली लिनक्स का फुल डेस्कटॉप वर्जन इंस्टॉल करूँगा यूजिंग WSL2। तो WSL2 की दो मेन रिक्वायरमेंट्स हैं। नंबर वन ये कि आपके पास विंडोज़ 10 का वर्जन 2004 और हायर होना चाहिए। तो अपने विंडोज़ का वर्जन चेक करने के लिए यू कैन ओपन द स्टार्ट मेन्यू और फिर जो साइड में सेटिंग्स का आइकॉन आपको नज़र आएगा, क्लिक ऑन सेटिंग्स और फिर ये सेटिंग्स की विंडो आ जाएगी। इसमें से ये सिस्टम सेटिंग्स पे आप क्लिक करें और फिर ये साइड में जो आपको टैब्स नज़र आएंगे, स्क्रॉल ऑल द वे डाउन एंड सेलेक्ट दिस अबाउट टैब। और फिर यहाँ साइड में जो आपको डिटेल्स नज़र आएंगी, इसके विंडोज़ स्पेसिफिकेशन सेक्शन में इसका ये वर्जन आपको नज़र आएगा। इन दिस केस इज़ 22H2 and it is higher than 2004. So that means I can use WSL2 on this version of Windows. We'll close the settings window now. और उसकी जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो है PowerShell as admin user. So let's open the start menu and we'll search for PowerShell. और फिर जो साइड पे आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, we'll click on this and then you'll get the prompt for the admin user. Select yes on it and now we have PowerShell. So let's clear the screen first. अब चूंकि हमारे पास Windows 10 का 2004 और हायर वर्जन है तो we can use this WSL command. WSL command जो है वो वर्चुअलाइजेशन भी इनेबल करती है और सारी इंस्टॉलेशन भी हैंडल कर लेती है, तो सारा प्रोसेस जो है आपके लिए ऑटोमेट हो जाता है। ये मैनुअल तरीके से भी आप कर सकते हैं and then I'll just make another video to show you how to do it manually. But since we have the WSL command available, so we'll use this WSL command in this video. तो अगर आपने ये मालूम करना है कि कौन कौन सी लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशंस अवेलेबल हैं WSL पे इंस्टॉल करने के लिए, तो we can list it using the WSL command. So we'll use WSL dash list and then dash online. Press enter. अब हमारे पास जो है ये सारी लिस्ट आ गई कि ये सारी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस जो हैं अवेलेबल है हमारे पास इंस्टॉलेशन के लिए। तो सिंस वी आर इंटरेस्टेड इन Kali Linux, तो we'll copy this Kali Linux name from here using Control C and now we'll type the command to install Kali Linux using WSL. कमांड जो है इसकी है WSL dash install -d और फिर हमने जो Kali Linux का नाम यहाँ से कॉपी किया था, we'll just paste it here and then we'll press enter. अब यहाँ पे Kali Linux इंस्टॉल हो गई है and then we have to go through some initial setup so it can create the user for us. तो यहाँ पे हम username टाइप करेंगे. In this case I'm going to type Sayal and then you will choose a password. Retype the password and now we are running Kali Linux on WSL2. तो लेट्स क्लियर द स्क्रीन. तो अभी ये जो Kali Linux आपके पास रन कर रही है, दिस इज़ जस्ट द कमांड लाइन वर्जन. तो अब हम इस पर एक पैकेज इंस्टॉल करेंगे जिस पैकेज का नाम है kali-win-kex. और यूजिंग द kali-win-kex पैकेज we'll have access to the desktop environment. तो जब भी हम कोई लिनक्स की नई डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉल करते हैं तो वी नॉर्मली अपडेट द पैकेज रेपोजिटरीज. तो इसलिए हम इसके ऊपर भी इसकी पैकेज रेपोजिटरीज जो है उसको अपडेट करेंगे यूजिंग sudo apt update. Type in the password. It will take few seconds and minutes and it will update the package repositories depending कि आपका इंटरनेट कितना तेज़ है. I will speed up the video. Package repositories update हो गई हैं and now we'll install the kali-win-kex package that will also install the desktop environment with it. So let's do sudo apt install kali-win-kex -y. Press enter.
अब जो है kali-win-kex पैकेज जो है इंस्टॉल हो गया एंड नाउ वी कैन रन kali linux विद फुल डेस्कटॉप सपोर्ट. तो उसकी कमांड है kex -win, और अगर आपको साउंड सपोर्ट चाहिए तो ऑल्सो ऐड -s टू इट एंड देन विल प्रेस एंटर. विल ask for password. तो अब आप जो है देख सकते हैं कि ये kali linux जो है इस टाइम डेस्कटॉप रन कर रहा है. और एंड देन जस्ट फॉर गुड मेजर वील ओपन द फायरफॉक्स ब्राउज़र, और ये वाकई kali linux का डेस्कटॉप ब्राउज़र है. अब ये जो इस टाइम kali linux आपको नज़र आ रहा है इसका डेस्कटॉप, बेसिकली दिस इज़ रनिंग यूजिंग द टाइगर VNC. और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप विंडो जो है वो मिनिमाइज करने का कोई ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है. सो टू गेट आउट ऑफ दिस kali linux environment and go back to Windows, हमारे पास एक शॉर्टकट है, that is the function F8 key. So we'll do press on the F8 function key, और फिर आपको यहाँ पे ये मेन्यू नज़र आ जाएगा. You can simply disconnect from here. You can also minimize it. और फिर आप अपने विंडोज़ पे वापस चले जाएंगे, बट जस्ट फॉर नाउ we'll just simply disconnect. And now we are back to the Windows. अब जो पहले kali linux रन कर रही थी डेस्कटॉप में वो टाइगर VNC के ज़रिए रन कर रही थी. देन kex के पास एक इन्हेंस्ड मोड भी है जो कि आपको विंडोज़ के जो नेटिव टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, तो उसके ऊपर भी आप kali linux का डेस्कटॉप जो है रन कर सकते हैं. तो उसकी कमांड है, उसको बेसिकली kex जो है इन्हेंस्ड मोड कहता है. तो लेट्स फर्स्ट क्लियर द स्क्रीन एंड नाउ विल टाइप kex -esm, और साउंड सपोर्ट के लिए बल्कि -ip, ताकि वो IP भी मैप कर दीजिए. और देन we'll type -s for sound support and we'll press enter. Then we'll ask for password. You'll type the password, press enter, और फिर ये आपके पास ये कुछ डायलॉग बॉक्स आ जाएगा. क्लिक ऑन कनेक्ट एंड देन क्लिक ऑन यस. और अब आपको ये kali linux जो है आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे RDP की विंडो नज़र आ रही है आपको. अब आपको यहाँ पे हर चीज़ काफ़ी छोटी नज़र आ रही होगी. सो इफ़ यू हैव अ हाई रेजोल्यूशन मॉनिटर तो यू कैन फिक्स इट बाय ओपनिंग दिस kali linux मेन्यू एंड देन यू विल टाइप HIDPI. तो kali linux के पास ये हाई DPI सपोर्ट है, तो यू विल जस्ट इनेबल इट and now everything is back to a reasonable size. अगर हमने अब विंडोज़ के ऊपर वापस जाना है तो we can minimize this using this top bar here. We can minimize it and now I am back to my Windows environment. और अगर मुझे kali linux में वापस जाना है तो I can just open this minimized window and I am back in kali linux. So that's it. That's how we can have kali linux on WSL with full desktop support. Thanks for watching. I'll see you in the next video.